सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग महर्षि व्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय पारायण श्रृंखला में पुनः समुपस्थित हैं। प्रकृत इस अध्याय में योगी नाम योग धारणोत्क्रमण प्रकारकस्य निरूपणम सद्यो मुक्ति क्रम मुक्तियोर्निरूपणं च, अर्थात योगियों के द्वारा योग धारण, योग के माध्यम से प्राण त्याग और सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, जो दो मुक्ति के जो दो विभाग बताए गए हैं, इन विभागों का यथार्थ वर्णन किया गया है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघ दृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मणे सपन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामयेवासनयाशयानः अतः कविर्नामसु यावदर्था स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यां चितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणैः किं सत्यं जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ शति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनन्तः तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र कस्तां त्वनाद्रेत्यपरानुचिन्ता मृते पशून् शतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्तर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाशसं लसन् महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम् अदीनलीलासिते क्षणोल्लसत् भ्रूभंग संसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते
एकैकशृङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद् गदाभृतः जितं जितं स्थानमपूह्य धारयेत् परं परं सुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तिभोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावशाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चाशनमाश्रितो यदा जिहासुरीममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्नियक्षेन्मनसा जिताशुः मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञयेतां निनयेतमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां जयिशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यददुत्सृशिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेद्व्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुगन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सु नमयेजितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्माद् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं तनकैर्नयेत तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत तस्माद् भ्रुवोऽनन्तरमुन्नयेत निरुद्धशब्दा यतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर्निर्भेद्यमूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायशानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निभाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम् वैश्वानरं याति विहाय सागतः शुपूष्णया प्रम्भपथेन शोचिषा विद्यूतकल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपसयुषुमारं तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णो रणीयशाविर्जेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजष्टधिष्ण्यम् यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नातिर्न चेद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित् ततोदः कृपया निदं विदाम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरद्वरम् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले
वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं स्वचैव श्रोत्रेण चोत्पेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वशाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्गः एते श्रुतिते नृपवेदगीते त्वयाभिपुष्टे हहत्सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृता विभ वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवन् ब्रह्मकार्थेन तिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवश्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैः अनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवतयात्मनः सुताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। नमो नमः।